So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Code A2Z. So today we have to build a new project on the machine learning. So आज हम एक मशीन लर्निंग मॉडल का एक नया प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे और आज के प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो है मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। जैसे कि हम लोग देखे होंगे, देखते ही हैं, जैसे कि यहाँ पे नेटफ्लिक्स सर्च करते हैं। सो नेटफ्लिक्स पर हम कई बार देखते हैं कि जो हम किसी एक मूवी को देख रहे होते हैं, जैसे कि सपोज करो ये वाली एक मूवी है। अब हम इस मूवी को देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ से ये अकाउंट साइन इन मांग रहा है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम एक मूवी देखते हैं और हम क्या है कि फिर उस मूवी का सिमिलर टाइप का हम एक और सेकंड मूवी देखना चाहते हैं। तो क्या है कि इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हुआ, हॉटस्टार हुआ, या फिर अमेजन प्राइम हुआ, या और भी कई सारे, जैसे जियो सिनेमा है, और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो क्या है हमको सेम टाइप के सीरीज या फिर सीरियल्स या मूवीज या फिर कुछ भी मतलब उसी तरीके की पर्टिकुलर कंटेंट हमको रिकमेंड करते हैं, जिसमें क्या है सेम टाइप की स्टोरी होती है, जेनर उसका उसी टाइप का होता है। जैसे रोमांस की देख रहे हैं तो रोमांस टाइप, या फिर कोई थ्रिलर देख रहे हैं, या फिर कोई हॉरर, या फिर कुछ एडवेंचरस मूवी देख रहे हैं तो उस तरीके का। तो हम क्या है आज अपने लिए पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन सिस्टम तैयार करेंगे जो हमारी खुद की मूवीज के डेटा सेट पे होगा, और पर्टिकुलरली मतलब उसी टाइप की मूवीज को मतलब हमको रिकमेंड करेगा जिस टाइप के हमको पसंद होंगे, ठीक है। तो ये कैसे डिजाइन होता है बेसिकली रिकमेंडेशन मॉडल, हम वो आज सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है कि उसका एक पाथवे डिसाइड करते हैं। जैसे कि ये हमारा उसका पाथवे है। सबसे पहले एक पेंसिल पिक कर लेते हैं। जैसे कि इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या है, डेटा एक्विजिशन। तो किसी भी एक मशीन लर्निंग मॉडल का सबसे प्राइमरी फैक्टर होता है कि उसमें डेटा क्या फीड है, डेटा क्या इनपुट है, ठीक है। अगर हमारे लिए सबसे प्राइमरी चीज़ यही होता है कि डेटा होना जरूरी होता है। अगर डेटा नहीं होगा प्रॉपर कि किस तरीके का हमें एप्लीकेशन बनाना है और उसी तरीके का डेटा नहीं है हमारे पास, तो उस तरीके का हम मॉडल तैयार नहीं कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम डेटा को सर्च करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा स्टार्ट द कोड। तो हम फिर देन कोडिंग स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम पाइथन यूज करेंगे और कैगल नोटबुक यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, देन प्री प्रोसेस करेंगे अपने डेटा को, और उसमें प्री प्रोसेसिंग में हमारे कुछ डिफरेंट स्टेप्स होंगे जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड होंगे, या फिर कुछ अपने क्या कहते हैं स्क्रैच कोड होंगे, ठीक है, जिससे कि हम क्या अपने टेक्स्ट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। देन फीचर इंजीनियरिंग करेंगे, कुछ नई फीचर्स अगर डेवलप करने हो, उन्हीं फीचर्स में से जो भी फीचर्स उस डेटा सेट में दे रखे हैं तो फीचर इंजीनियरिंग भी करेंगे, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड हम अपने मॉडल को बिल्ड करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे कि बेसिकली वो ठीक से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं, कि हमारे जो जिस तरीके का हमने रिकमेंडेशन मॉडल बनाया है वो रिकमेंड कर पा रहा है या नहीं, इस तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। देन एट द एंड सेव करेंगे मॉडल को। मॉडल को सेव करने के लिए हम बाइनरी फाइल्स यूज करते हैं नॉर्मली, क्योंकि उसका साइज क्या है, कम होता है, और मॉडल एक अच्छे तरीके से उसमें प्रॉपर्ली सेव हो सकता है, और वो इजीली बूट भी किया जा सकता है। अगर फर्दर हमें क्या है उसको किसी भी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना है तो इसे ईजी रहता है बूट करना, ठीक। तो उसी तरीके से हम क्या है कि जैसे पिकल फाइल होती हैं, जॉबलिब फाइल होती हैं, ये क्या है बाइनरी फाइल्स होती हैं जो एनकोडेड रहती हैं, तो हम उनको एनकोडेड करते हैं, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स हम मॉडल को डिप्लॉय करेंगे। मॉडल को डिप्लॉय करने के अलग-अलग एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि फ्लाश हुआ या स्ट्रीमलिट हुआ, तो हम क्या है कि स्ट्रीमलिट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो हम सबसे पहले अपने पहले स्टेप पर चलते हैं कि हमको डेटा चाहिए, ठीक है। तो चलो, तो पहले सबसे पहले हम कैगल पर चलेंगे। सो सी ये मेरा खुद का मतलब एक बिल्डअप डेटा सेट है कैगल का, जो कि मूवीज डेटा सेट के नाम से है। इसका जो लिंक है उसे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। बाकी हमको क्या है इस डेटा सेट को पर हम वर्क करेंगे, ठीक है। इसमें इस डेटा सेट में हमें 4 कॉलम दे रखे हैं, टाइटल है, ओवरव्यू है, जेनर है, और वोट एवरेज है, ठीक है। तो इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है किसी भी मूवी का रिलेटेड, जैसे कि द स्वैनसंग रिडेम्पशन, द गॉडफादर पार्ट 2, लाइक दिस, ठीक है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। उन सबका पूरा इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन है। मूवीज के नेम अलग अलग लैंग्वेज में है, पर डिस्क्रिप्शन सबका इंग्लिश में ही है, ठीक है। सो हमको बेसिकली बिल्डअप करना है, जो भी मॉडल है वो बेसिकली हम डिस्क्रिप्शन पर ही मॉडल को बिल्ड करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा सबसे पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है कि हमको एक डेटा सेट चाहिए था जो कि प्रॉपर्ली रहे, और ये डेटा सेट मैंने IMDb की वेबसाइट से उसका API यूज करके डेटा सेट को बिल्ड किया है, ठीक है। सो इसमें जो इस डेटा सेट के बारे में और क्या है कि इसमें 9747 एंट्रीज हैं, और कोई भी एंट्री इसमें टाइटल में कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब कुछ फिल्ड है, और ये प्री प्रोसेस्ड है ऑलरेडी ये डेटा, और ओवरव्यू भी फिल्ड है सबकी सब वैल्यूज। जेनर में 2 वैल्यूज कुछ मिसिंग है। सो इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि हम ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि 2 मूवीज भी ड्रॉप करना कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जेनर की वजह से। बाकी वोट एवरेज में भी कुछ भी एम्प्टी नहीं है, तो सारी की सारी वैल्यूज फिल्ड अप है, ठीक है। तो अब क्या है कि हम अपना मॉडल बिल्ड करना शुरू करते हैं और सेकंड स्टेप पर चलते हैं, कोड करते हैं, ठीक है। तो हमने एक नोटबुक बना लिया नई, जिसका नाम रख दिया है मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, और ये हमारा कोड है नीचे। तो सबसे पहले यहाँ से ये जो कोड है उसे हम खुद से लिख लेंगे। बाकी हमको फाइल का पाथ चाहिए, तो फाइल का पाथ के लिए ये कोड रखते हैं और देन रन कर देते हैं, ओके। यहाँ पे हमारा डेटा सेट लोड है ऑलरेडी, और डेटा सेट लोड होने के बाद अभी प्रिपेयर हो रहा है, प्रिपेयरिंग टू डाउनलोड। डेटा सेट डाउनलोड हो चुका है, सेशन बूटअप है। सो बेसिकली हम जो रिकमेंडेशन मॉडल बना रहे हैं वो क्या है, एक डिस्टेंस बेस्ड लर्निंग होता है, क्योंकि रिकमेंडेशन मॉडल अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, कि हमको क्या है कि कंटेंट बेस्ड बनाना है, कंटेंट बेस्ड, या फिर हमको क्या है कि किसी भी 0-1 के बेसिस पे, रिव्यूज के बेसिस पे हम रिकमेंडेशन बनाते हैं मॉडल। तो हम क्या है बेसिकली ये जो हमारा मॉडल है वो कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन मॉडल है, ठीक है। सो ये हमारा पाथ है। सो पहले पाथ को कॉपी कर लेते हैं, और इसका फाइल का पाथ के नाम से एक वेरिएबल बना के उसे उसमें कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ओके। नाउ सेकेंडली हम क्या है पहले कुछ लाइब्रेरीज को, कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं, जैसे NumPy एज NP, ओके, SPD। आई डोंट नो व्हाई दीज आर सजेशंस कमिंग अप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग द डेटा सेट। सो ये जो बुक है, नोटबुक है, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप लोग इसका कोड भी देख सकें प्रॉपरली, कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। सो डेटा सेट रीड करते हैं सबसे पहले।
वेरिएबल का नाम मूवीज रख लेते हैं और pd.read.csv और फाइल का पाथ, देन जस्ट रीड movies.save. So see, there are 9047 rows and 4 columns. Okay, so एक्सप्लोर करते हैं पहले डेटा सेट को, दो एंट्रीज को सीकर देखते हैं. Yeah, you can see from here. These are two movies title and this is the overview of that movie. These are the genres and these are vote average. Okay, some other movies like Maneka, The Emperor's Club. Okay, so let's see what is the overview of The Emperor's Club. Movies.iloc2770 is the ID of that movie. I want to see the overview. Okay, so see, this is the overview of that movie. William Hundert, I think this will be any character in of that movie, is a passionate and principled classics professor who finds his tightly controlled world. Okay, so I think this is a drama movie. So and the rating is 7.12, which is a quite good enough. So let's move to the part of the pre-processing because I have starting the coding. So now moving to the pre-process part. Pre-processing. First of all, watching the null values. So see, there are two null values of the genres, which is not a very high values, so it is not required to drop those values because we are basically working on the overview column. So now हम क्या है डिस्क्रिप्शन का एक कॉलम प्रिपेयर करते हैं और बाकी की जो वैल्यूज हैं जैसे ओवरव्यू है, जेनर्स है और वोट एवरेज है, इन तीनों को कंबाइन करके रखते हैं ताकि क्या है ये कंबाइंड में रहेंगे तो हम क्या है प्रॉपर्ली कुछ भी चीज़ कुछ भी इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं करेंगे. ठीक है, तो हम क्या है इन सबको पहले कंबाइंड वे में रख लेते हैं और देन वर्क करते हैं. सो एक मूवीज डिस्क्रिप्शन के नाम से कॉलम बना लेते हैं जिसमें हम क्या है ऐड कर रहे हैं ओवरव्यू प्लस मूवीज जेनर्स प्लस movies vote average. Okay, so now just press enter. Oops, there is one error of the type error, which is because of the we are combining the float values with the string values. So this is a float values, you can see from here, movies dot info. You can see vote average is a float type variable. So float type variable, so we have to convert it into the string so that it will be combined with the overview and genres and create a description column. Okay, so see, description column is now formed. So movies dot sample and two movies. So see, this is the description. If we have to see the description of Henry, portrait of a serial killer. So see, description of 4520 movie ID. Okay, so movies dot iloc 4520.desc. See, this is the description. Henry likes to kill people, and these are the genres: crime, horror, and thriller. And this is the rating 6.722. Sorry. Okay. So now moving with the other processing steps. इस डेटा सेट में हम जैसे देख सकते हैं कि क्या है, कुछ कैपिटल लेटर्स में है, कुछ स्मॉल लेटर्स में है और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी इसमें है. ठीक है, तो हमको क्या है इन सबको रिमूव करना होगा. कुछ सारे स्पेशल क्या कहते हैं स्टॉप वर्ड्स भी हैं जैसे कि टू हुआ, ऑफ, इन. सो ये क्या है कि बेसिकली इन स्टॉप वर्ड्स हैं. सो हमको इनको भी रिमूव करना होगा ताकि हमारा डेटा सेट बिल्कुल क्लीन दिखे और मॉडल बिल्डिंग में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए. वरना क्या है प्री प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है मॉडल बिल्डिंग में. ठीक है, तो हमको क्या है सबसे पहले जब हमारा मॉडल बने तो उसके पास एक क्लीन डेटा सेट जाएगा तो वो इजीली समझ पाएगा, वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर पाएगा. वरना अननेसेसरी वो काफ़ी सारे वर्ड्स में उलझ जाता है. तो ठीक है, तो हमको क्या है कि पहले अपने स्पेशल कैरेक्टर्स हुए, पंक्चुएशन हुए या फिर स्टॉप वर्ड्स हुए तो उन सबको एक एक करके रिमूव करेंगे. सो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पूरे डेटा सेट को इसमें लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द लोअर केस कैरेक्टर. एक काम करते हैं, एक मार्कडाउन क्रिएट करते हैं, लोअर केसिंग ऑफ द डिस्क्रिप्शन. इससे पहले हम एक काम करते हैं, जैसे कि हमने ये तीनों को कंबाइन कर ही लिया है तो अब इन तीनों का हमको कुछ ज़्यादा यूज़ तो नहीं है, तो इसलिए काम करते हैं इन तीनों को पहले ड्रॉप आउट कर देते हैं. ठीक है, सो मूवीज डॉट ड्रॉप कॉलम्स. कौन कौन से कॉलम्स हैं? ओवरव्यू, जेनर्स और वोट एवरेज इन प्लेस ट्रू. ओके, सो अब हमारा डेटा सेट का शेप देख लेते हैं. सो सी, देयर आर ओनली टू कॉलम्स, movies dot head. These two columns are there, description and title. Okay, so we are first of all watching the description of the first movie. So movies dot desc zeroth column, zero through. So see, this is the description of this movie. इसमें जैसे देख सकते हैं जैसे ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इनको हमें रिमूव करना होगा. उसके अलावा काफ़ी सारे स्टॉप वर्ड्स हैं. उसके अलावा ये क्या है कि डेटा सेट को समझने के लिए प्रॉपरली
हमको इसे एक स्मॉल लेटर में लेके आएंगे, ताकि क्या है कि मॉडल जो है अच्छे से प्रॉपर्ली बाकी सारे वर्ड्सों के साथ कनेक्शन सेट कर सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लोअर केसिंग से। सो मॉडल को लोअर केस करना है सबसे पहले। सो मूवीज, डिस्क्रिप्शन को लोअर केस करेंगे तो मूवीज, ये क्या होता है, ये डिस्क्रिप्शन बेसिकली अगर हम इसका डेटा टाइप देखें, डॉट डी टाइप, ये एक सीरीज टाइप होता है, ऑब्जेक्ट है, मतलब ये डिस्क्रिप्शन जो कॉलम है वो एक ऑब्जेक्ट है, पर हम अगर इसे वैसे देखें पर्टिकुलरली कॉलम को, तो क्या है, एक सीरीज है। पर अगर दोनों कॉलम कंबाइंड में देखे जाते हैं तो टेबल के फॉर्म में से डेटा फ्रेम बोलते हैं। तो हमको क्या है कि जब हमको सीरीज को किसी दूसरे क्या कहते हैं लोअर केस में करना होता है, तो पहले उसे स्ट्रिंग में करना होता है कि उसका एक एक जो एलिमेंट है वो एक स्ट्रिंग फॉर्म में है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, पहले मूवीज डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट एचटीआर, ताकि उससे पता चले कि एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के पास ये लोअर एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो अब हम क्या है कि हम अपने पूरे के पूरे डेटा सेट को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकेंगे। सो लेट्स सी, या मूवीज डिस्क्रिप्शन 0 सी, सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो स्मॉल स्मॉल लेटर्स में हो चुके हैं, जो कि प्रॉपर्ली एक फंक्शनिंग कंडीशन है। सो इससे पहले हम एक मार्कडाउन क्रिएट करते हैं कि हम यहाँ से पहले, यहाँ से नहीं, या वहीं से हम यहाँ पे क्या है अपना एक एनएलपी टेक्निक्स स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। सो एनएलपी टेक्निक्स स्टार्ट कर चुके हैं, इसमें पहला हमारा हो चुका है लोअर केसिंग। सो उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है लोअर केसिंग का कन्वर्ट करने के बाद डेटा सेट में से बाकी के जितने भी कुछ हैं, जैसे कि कुछ एचटीएमएल टैग्स वगैरह, जैसे कि हमारे इस डेटा सेट में तो कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी एचटीएमएल टैग्स वगैरह, तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कुछ जिस तरीके से मैंने डेटा सेट एपीआई से कॉल किया है, तो उसमें इतना श्योर है कि कुछ भी एचटीएमएल टैग्स नहीं होगा, कुछ भी एंकर टैग्स या लिंक्स वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। सो हम क्या है, बस पंक्चुएशन मार्क्स या स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं उनको रिमूव करेंगे सबसे पहले। सो रिमूव पंक्चुएशंस। सो पंक्चुएशंस में हम जैसे क्या है, स्ट्रिंग जो होती है, एक लाइब्रेरी होती है, पैकेज होता है पाइथन में, और ये जो स्ट्रिंग पैकेज होता है इसमें हमारे पास एक पंक्चुएशन की डिक्शनरी होती है स्ट्रिंग के पास। अगर हम देखें तो ये देखो, ये सारी पंक्चुएशन जैसे एक्सक्लेमेटरी या फिर डबल कोट, हैशटैग या डॉलर साइन, ठीक है, ये सब। तो अब क्या है, हम इनको एक्सक्लूड करेंगे, इनको रिमूव करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको स्टोर कर लेते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स के नाम से या फिर पंक्चुएशन के नाम से, स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, ओके। ये एक क्या दिक्कत है, नाउ पंक्चुएशन के नेम से स्टोर कर लिया है। और अब क्या है, हम एक फंक्शन तैयार कर लेते हैं ताकि हम उस फंक्शन को डायरेक्टली अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। सो डेफ रिमूव पंक्चुएशन, हम एक टेक्स्ट को लेंगे और उसके टेक्स्ट के एक एक कैरेक्टर को चेक करेंगे कि कहीं वो पंक्चुएशन में तो नहीं है। अगर वो पंक्चुएशन में होगा तो हम क्या है उसको रिप्लेस कर देंगे विद स्पेस या फिर एम्प्टी से, ठीक है। सो टेक्स्ट डॉट रिप्लेस कैर विद एम्प्टी, ओके। एट द एंड हम क्या है उस टेक्स्ट को रिटर्न कर देंगे। सो ये फंक्शन है सिंपल ही, अगर बैठ के आप पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक सिंपल फंक्शन ही डिजाइन है। एंड देन स्टार्ट एंड अप्लाइंग ऑन द डिस्क्रिप्शन फीचर, ओके। सो मूवीज डॉट description dot apply remove punctuation. Now I think punctuation will be removed. Wait, there is a float object has no attribute, replace. So first we have to convert it as a string and then pass it to this. Has no attribute, apply, okay. So no problem with it. We have to first see what happening in with this description, then apply, remove punctuation. Why it is not applying? Remove punctuation 0. Then yeah, I think we have to assign it dot apply remove punctuation. Oops. Float object has no attribute, replace. Why told it as a float object? Movies dot info, it is a object type, so there are two entries which are empty. I think I have to see, yeah, there are two entries which are empty, I have to remove them. So float, so movies dot drop null in place true, और इससे हमारा movie save. Now this will be movie save, yeah. Now see movies description 0. Now you can see I have removed all the special characters from the dataset. Now moving to the second part, we have to remove all the stop words, okay. So let's move to remove all the stop words from we will be using NLTK library. So first writing the heading of remove stop words, okay. Now from NLTK dot corpus import stop words,
ओके। सो सारे के सारे स्टॉप वर्ड्स क्या है, ये इस एनएलटीके का जो पैकेज है उसका कॉर्पस है, कॉर्पस कहते हैं पूरी डिक्शनरी को, और पूरी की पूरी डिक्शनरी में स्टॉप वर्ड्स का भी एक अलग से फीचर है। वो सारे के सारे स्टॉप वर्ड्स को कैरी आउट करके लेके आएगा और हमें पता चल जाएगा कि हाँ कौन कौन से स्टॉप वर्ड्स को हमें एक्सक्लूड करना है। जैसे कि मैं एक बार के लिए आपको दिखा देता हूँ स्टॉप वर्ड्स कौन कौन से हैं इसमें। अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग स्टॉप वर्ड्स होते हैं। तो जैसे कि इंग्लिश का अपना एक डिक्शनरी है जिसमें अलग अलग उसके स्टॉप वर्ड्स हैं। सो लेट्स सी इसे वाले किसी में स्टोर कर लेते हैं। स्टॉप वर्ड्स, एस वर्ड्स, ओके। वर्ड्स हो गया, तो एक काम करते हैं एस टी वर्ड्स, स्टॉप वर्ड्स ना, दैट्स फाइन। So ST words. See, these all the words which are the stop words like I, me, my, myself, she, we, win, at, and, for, what. These all are the stop words. Okay, in the English dictionary. So let's move to the next part. So we have to create a function, remove stop words. So now we have to create a new text list. Afterwards, we will be join all the text with the space. Okay. So let's start for word in text dot split y space. Okay. It is by default splitting by space. Okay. So moving to the next line, if word in exclude, sorry, which I have to removing from the stop words. So st words. So इस जो भी कोई वर्ड अगर इसमें मिलेगा जो हमारी डिक्शनरी है जो लिस्ट है, क्योंकि अगर हम इसका टाइप देखें st words dot d type, sorry, d type. I think this is not working in this way. st words dot d type. There is the, I think this is not a function. This will be a type. Leave it, but this is a list. You can see from the closing bracket from of the list and the opening bracket of the list. So this is a list, okay. And also you can see how many words are there. Length of st words. So 179 stop words are there. So now removing all these words from the text. Okay. So if this word is in stop words, then we have to remove that. But if it is not in it, okay. So if not word in stop words, then we have to new text dot append that word. Okay. Now at the end we have to create new variable, new text, and providing all the characters to it, and new text dot clear, so that memory will be clear, and at the end we have to return the string by joining all the characters of the x. Okay. So now this function is ready. So we have to just apply it on the description. So movies description equals to movies description dot apply remove stop words. Okay, I think it should be worked. Yeah, you can see I have to remove all the stop words in the description column. Yeah, all the stop words are removed from the description column. You can see from here. And now moving to the next part, we have to start with the NLP techniques, so that we have to convert these words into the numerical features, so that model will understand it properly. Otherwise the model can't understand the English language or any other language of the country. Okay. So because model is the machine is basically learn only 0 and 1 numerical values only. Okay, binary values. So first we have to convert it into the numerical values, and that then that values will be encoded into the binary values and feed it to the model, so that model will train automatically. Okay. So after start with the model building part, model building. Okay. So in model building, first we have to convert this create a tokenizer, so that all the words will convert into the tokens, and yeah, we have to use a tokenizer. Okay. So we are using count vectorizer tokenizer, which is very efficient in model building. So first we have to import it from the Scikit-Learn. Okay. Okay, so from Scikit-Learn dot feature extraction dot text import count vectorizer. Okay. Now we have to call it, then create an object of the count vectorizer. Okay. So first we have to create a count vectorizer. We will be keeping the maximum features equals to how many values are there in the data set, how many rows, movies dot shape 0. These are the values, movies dot shape 0. Then we have also considering the stop words. So removing the stop words
uh, with the English dictionary. And then just create the CV vectorizer. Okay, yeah, you can see it is now created. Then afterwards we have to transform this use this vectorizer to transform all the values of the description into the numerical features, so that it will be converted into the vector, and then vector will be feed in the dataset. Okay, so let's move with the data model. We will be using basically on the distance based learning. Okay, so we are using a cosine similarity. So let's build it on the Scikit-Learn dot metrics dot pairwise import cosine similarity. Okay, so just import it. Sorry, I have to wrong there. Yeah, cosine similarity is now imported. So first we have to convert it into the vector, and you by using the CV count vectorizer. Okay, and then vector is equals to CV dot fit transform on which column? It is a description column. Okay, and then its values will be taken up, which is of h type of u, and then finally it is converted into array and store it into the variable vector. Okay, so yeah, we can see the vector dot shape. It is this, and then also see the vector. Yeah, you can see the vector contains a lots of zeros, because for a one word there is a one entry only which contains a one, and others rest of the columns contain zero, because any one word is expressed by a one row. Okay, so that's why there are 9745 rows and 9745 columns. Okay, so let's move with the cosine similarity, so that it helps to find the distance between the two similar vectors, and get the similarity between the two different and movies. Okay, so let's move with the similarity equals to cosine similarity, and then just pass the vector which I have created of the 9745 movies, and just press enter. Now it will take some more time, so let's see what will be the similarity. Okay, so it takes a little bit time, so that till then you can see I have completed data acquisition part, and also completed the coding, and also completed the pre-processing step, text preparation, and feature engineering. Now we have working on the model building part, and then we will be performing a model evaluating. Then afterwards save the model and deploy it on the Streamlit. Okay, so let's see. Similarity is prepared. Then now similarity. See, this is a similarity of the one movie, which is this movie. So now if we want to see the similarity, zero is respective to a first movie part. Okay, if we want to see that movie, and what is the shape of that movie? See, 9745. These are the features created for a one movie overview. Okay, now see what is the shape of the similarity. So this is also similar to the vector which I have created, and now see working on the model evaluation part. Model evaluation. So for evaluating the model, we have to first providing a movie name, and then we have to analyze what is the recommendation provided by the similarity file. Okay, so let's see. Movies dot head to, so see, then uh, movies title is let's see, the Godfather. Okay, so what will be it? So this is the description along with it. So let's see what is the its index. Its index is 1. Okay, so this is the index. First we have to find the index, so that on that index what is the similarity. So see, similarity at 1 dot shape, similarity at 1. So this is the numerical form, so we can't understand those values, but it is only understandable by the machine. So we have to encode it, decode these values, and find which are the values provided by him. Okay, so let's see. By using the distance, we have analyzed that we have to first of all enumerate all the movies which are the similarity related to the first movie. Okay, which I have provided the index 1. Okay, so let's say enumerate similarity of 1. So let's see, this is a vector for id or value, and this, and then print value.
So these are the 9,745 values, and some of these values are 1, and also some of the values are 0.31, 0.42. So this is not in a sorted form. So first of all, we have to sort this enumerated part. So to sort this, first we have to convert it into list, and then convert and then sort it. So sorted list, okay, and the reverse order, and then just print the value. Okay, see, 9744 is 0, and 0.14, 0.05, still it is not sorting on the basis of the value. I think we have to correct it. Let's rewrite it. So we have to require this much part, and let's see, this is that part, and we have to provide a key which is lambda vector and vector 1. Yeah, now you can see it is sorted on the basis of the values. You can see 0.48, 0.34, 0.33, 0.31. Okay, so first value is mostly correlated with the second value, second movie, and it is also related with this. It is around of the 34%. Okay, so let's save it in the distance. Okay, so now because this is on the cosine similarity, so we have to see only first 10 values. Okay, yeah, this is the first 10 movies. Okay, so let's move with the what is those movies name. So we have to create find those index. Okay, so first 10 values and print their names. So movies dot ilock ith 0, so that I can provide the index, and then its title we have to print. So see, the Godfather is most likely with the part 2. Its sequence is its sequel, and Blood Ties, Joker, and also most related with the Batman also. Okay, so and let's build up a function so that it will be combined at one place. So prediction is very good, and model is working very fine. Okay, so after evaluation, we have to create a prediction function. So def predict, sorry, recommendation. Okay, also change this name also, recommendation. Okay, so first we have to provide what is the movie name, and also provide number of recommendation, and then just carry out its name and find the title, find its index by using this. Okay, so replace the Godfather with the movie name which is provided to the function, and getting its id and idx कर लेते हैं. Okay, so then we have to find its distance by using that formula, and paste it here, and now we have to provide its idx, and just complete with it. Now we have to print all those names of the movies for I in distance from 1, because 0 is that movie also, because I have provided the Godfather, then first movie is also the Godfather, so I have to provide from the second to 10. Okay, so number of recommendation which I will be provided, so number of recommendation. Okay, so from them, and also cat +1, so that last value will also carried out, and just print its movies dot ilock I0 dot title. Okay, so this function is completed. So let's see, and check it. Recommendation of life movie, and 10 recommendation are required. See, life movie is similar to Ink Heart, News of the World, Rabbit Hole, Seventh Son, Old Henry, and like these. Okay, let's move to the another part. We have to save all these all this model. So model saving. तो मॉडल को सेव करेंगे सबसे पहले हम पिकल फाइल में. ओके, सो पिकल को कॉल करते हैं पिकल डॉट डंप, और हमको किसको पहले हमको रखना है, मूवीज को भी रखना है, और मूवीज को रखने के बाद तो मूवीज लिस्ट डॉट पी के आर. ओके, इसको हम क्या बाइनरी फॉर्म में लिखवा लेंगे, राइट इन बाइनरी फॉर्म. ऑल्सो just also save the similarity with the similarity dot pickle. Okay, so just save it. Now we have saved it. You can see here that file. Yeah,
Now we have to download those files, download it, and also download it. It takes some more time because it is 759 MB. Okay, so we can also use the imdb URL API key, imdb API key. From that API key, we have to find the poster. Also, where is that API? Yeah, this is the API. Wait 1 minute. First of all, save it. Getting access to the API and its overview. API key, imdb data, imdb API. Wait 1 minute. I have to find that API also. I think that API is saved in it. Mm, 1 minute. Okay, so let's move to close this notebook and working on the Streamlit and see what will be the recommendation. Okay, on the Streamlit and deploy the model. Okay, so let's complete it. So just save it, save publicly, and save. Quick save, and yeah, save it and close the notebook. And comes to the Streamlit, we have to call, open the projects, not projects. We have to work on the replit. Okay, so let's work on the replit. Start building. So wait for 1 minute. सो हेलो गाइस, यहाँ पर हमने क्या है कि मैंने पीएस कोड में ओपन कर लिया है, अपनी दोनों फाइल्स को यहाँ लेके आ गया हूँ, जो मूवीज लिस्ट डॉट पिकल एंड सिमिलरिटी डॉट पिकल, इन दोनों फाइलों को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है और एक ऐप डॉट पी के नाम से फाइल बनाई है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों फाइलों को अपने सिस्टम में लोड करेंगे और अपना कोड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्ट्रीमलिट को हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम एक टर्मिनल खोलेंगे और टर्मिनल खोलने के बाद यहाँ सीधा लिखेंगे पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट। ठीक है, और मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये क्या है कि सब में रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड दिखाएगा। ओके, सो वेट करते हैं हम थोड़ी देर इसके लिए। सो देखो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो इसलिए मतलब मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट स्ट्रीमलिट एज एसडी। ठीक है, सो इसको इंपोर्ट करने के बाद हम क्या है अपना एक सबसे पहले सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, ht.title मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। ओके, ये मेरे में गिटहब कोपायलट इंस्टॉल है, तो इसलिए क्या है कि ये वैसे मतलब सजेशन करते रहता है। ठीक है, सो पहले यहाँ इसको टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं और स्ट्रीमलिट से सर्वर को रन करते हैं, स्ट्रीमलिट रन app.py। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है अपना सर्वर रन कर लेंगे। सो रन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सो सी ये हमारा क्या है टाइटल आ चुका है मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम के नेम से। सो अब हम क्या है कोड शुरू करते हैं अपने सर्वर के साथ। सो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है इन फाइल्सों को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो फाइल पाथ लिख लेते हैं, सिमिलरिटी पाथ इज बेसिकली हम इसका रिलेटिव पाथ कॉपी करेंगे। Where is this? This is the copy relative path. ओके, उसी तरीके से हम क्या है मूवीज लिस्ट का नाम मूवीज लिस्ट डॉट पिकल। ओके, सो दिस विल बी द फाइल एंड देन क्रिएटिंग अ रिकमेंडेशन। ओके, सो जो वहाँ फंक्शन हम क्रिएट किया था उसी फंक्शन को हम यहाँ कॉपी कर लेंगे या फिर हम खुद से उसे दोबारा से रिडिफाइन कर लेंगे। ठीक है, उसका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने उसमें क्या लिया था, एक मूवी का नेम लिया था जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी, नंबर ऑफ रिकमेंडेशन लिए हैं जो कि इंटीजर है। ठीक है, सो उसके बाद हम क्या एक अपना आईडी जनरेट करवाते हैं मूवीज से। सो मूवीज क्या है, बेसिकली हमको मूवीज को पहले खोलना पड़ेगा ताकि हम उसे रीड कर पाएँ। सो मूवीज इक्वल्स टू हम पिकल से रीड करेंगे तो इंपोर्ट पिकल। सो इसको पिकल से लोड करा लेंगे मूवीज लिस्ट और रीड करेगा बाइनरी फॉर्म में, उसी तरीके से हम सिमिलरिटी को भी। सो ये रीड करा लेने के बाद हम क्या है कि मूवीज को रीड कर सकते हैं। सो मूवीज के अंदर से जो टाइटल है वो टाइटल निकाला और अगर वो हमारे मूवी नेम से मैच कराएंगे और उसका इंडेक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आईडी आ रहा था। अब डिस्टेंस इक्वल टू था हमारा क्या
जो भी है सॉर्टेड लिस्ट इनुमरेट कर रहे हैं हम, सिमिलरिटी और रिवर्स ऑर्डर में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उसको फॉर्म किया था, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको तैयार करेंगे एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू रिकमेंड ऑल द मूवीज एंड स्टोर इट इन अ लिस्ट, ठीक है। सो हम उनको क्या है सबको स्टोर कर लेंगे ताकि हम बाद में उन्हें रिटर्न कर पाएँ, ठीक है। रिकमेंडेड मूवीज, ओके। सो इसमें हम कितने रिकमेंड कर रहे हैं उतना लेंगे, और पर हम इसने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, 1 से स्टार्ट करना है और +1 तक। तो इस तरह से हमने सबको स्टोर कर लिया, तो आप रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये चीज़ तैयार हो ही चुका है। सो अब हमको क्या चाहिए, मूवी का नेम। तो मूवी का नेम निकालने के लिए हम क्या है, सेलेक्ट बॉक्स खोलेंगे, सेलेक्ट अ मूवी और वैल्यूज पास कर देंगे। तो इस तरह से क्या है हमको मूवी मिल जाएगा। और कितने रिकमेंडेशन चाहिए, स्टेप 1 रखेंगे, ठीक है। और सी एक बटन तैयार कर लेंगे रिकमेंड के नेम से एंड देन जस्ट रिकमेंडेशन को कॉल कर देंगे। ये 2 वैल्यूज़ के साथ 2 वैल्यूज़ को पास करने के बाद राइट अप कराएंगे, ठीक है। सो ये हमारा मॉडल रेडी हो चुका है। सी रन करते हैं इसको अगेन, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा क्योंकि सिमिलरिटी जो फाइल थी वो मोर देन 750 MB की थी, तो उसको थोड़ा लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, पर एक बार लोड हो जाएगी तो फिर क्या है प्रॉपर्ली वर्क करेगा, ठीक है। बाकी का ये है कि अब ये आप लोगों का कुछ टास्क है कि आप लोग इसको डिजाइन करें, IMDb का एप्लीकेशन जो API की है उसको यूज़ करें और उससे यहाँ पे रिकमेंड कराएं। जैसे कि हम क्या है इससे रिकमेंड कराते हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सो लेट्स सी, ये बार बार एक तो लोड कर रहा है, तो इससे हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं @st डॉट कैश रिसोर्स डेफ लोड डेटा, और इसको रिटर्न करा लेते हैं मूवीज और इसको। और जब ये एक बार लोड हो जाएगा देन वी हैव टू स्टार्ट, ओके। सो ताकि ये दिक्कत ना करे, वरना बार बार लोड होगा तो इस तरह से हमारे सिस्टम को लैग फील होगा कि हम बार बार इसको लोड करा रहे हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं, इसको रन करते हैं, 1 तो एटलीस्ट 4। सो सी दीज आर सम मूवीज विच आर सिमिलर टू दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सी गॉडफादर like this, and some other are there, the Lord of Rings. See, we can also pass more values in it, okay. But see, this is from 1 to number of recommendation +1. Yeah, it's fine. We can also get more values. Yeah, so we can also write these movies like that, or yeah, in this way. Also highlight it like that, markdown, okay, like see this way. Now you have to design this website. You can also add some toast in it like this, st.toast loading data. We can add icon from here, like loading, not this one. I think we have to create just emoji, or when the application will start, and then also we can keep one more toast. Welcome to the movie recommendation system, like this. Welcome to movie recommendation system and loading data, okay. So in this way you can create the application and deploy your files, and just recommend if you have any question. You can see there are some problems because of the toasting function, so that's why some function will delay those values, but no problem, we can create some other toast also, okay. So intouchables like this. We can also add some more movies. If you have more data, then you can add more other movies also, okay. Like if you have to search for Doctor Strange, there are 2 movies with the same name. Then see, Doctor Strange is similar to Ravan and Rise of the Guardians Willow, and I don't know what is that language. This is I think either Chinese language or any other, okay. So you can go through this and search for also Avengers. No one will save you. I think we have to search for it. Midnight Sun, yeah. So in this way there are some 2 copies are also there. So duplicates you have to remove them, and also design the application and ping your application, and also deploy this website and ping your you can also participate in it. So thank you very much, and we will see you in the next time, okay.